Assalamu alaikum children. I hope everything is okay at your end. Today is 7th July 2020. The day is Tuesday and it's around 8:15 a.m. and we are going to start our computer class within 30 seconds inshallah. Our topic is generations of computers. So let's take a look on the slides. Okay children. Generations of computers. What is generations of computers? Yes, previously in last week we have studied about history of computer, history and development of computer. Once we have done with the history and development of computers, then what is the question of talking about generations of computers? What is the difference between history and what is the difference between history and development and generations? History and development is one thing where step by step different inventions came up in the market and lot of new technologies come up and things transform from one thing to the another. Okay, and generations of computer is that the basic idea is the same, but the rapid changes in technology bringing a new thing in the market, so that particular era, that particular time is called as one generation. Okay, where there is a marked difference. Okay, let's talk about the generations of computers. Before going towards the generations of computers, I want you to see this video. Once you will see this video, then you will be having the idea that what exactly is the generations of computers, okay? How hardware and software has evolved over time. Between 1945 and 1960, we had the first generation of computers which used thousands of batteries. As a result, they consumed a lot of power and generated large amounts of heat. They were large in size and very expensive too. Machine language was used to program and punch cards and keys. They were the fastest calculating device of their time and could do 5,000 additions or 350 multiplications in 1 second. Examples include YANG, UNIVAC, and UNIVAC 1. The second generation of computers came between the years 1960 when transistors replaced the vacuum. This made the computer smaller, faster, cheaper, and more reliable. They were more energy efficient, though they still generated a lot of heat. They were also the first computers to use magnetic core technology to store instructions in memory. They used machine and assembly language to program. Examples include IBM 7090 and CDC 3600. Third generation of computers was between 1964 to 1971 when integrated circuits or IC replaced the transistors. This made the computer smaller, faster, cheaper than earlier computers. They were accessed through keyboard, monitor, and even had an operating system to enable it to run different applications at the same time. They were now made available to larger companies as they were smaller and cheaper. Examples include IBM 360 and ADP 11. Fourth generation of computers started from year 1921 with the advent of microprocessors which use VLSI or very large scale integration technology to have thousands of IC on a single silicon chip. This made the computers small and portable. They were cheap and could work at high speed with a lot more accuracy and reliability. They had larger memory, which led to explosion in development of application software and handheld devices. Examples include all the computers we around today. Future generation computers
Okay, so children, you must have seen the video. This is all about generations of computers. Let's talk about the generations in details, that what era that particular generation has covered and what are the particular technology come up in that duration. Okay, I hope I'm audible. Fine. Children, so let's talk about generations of computers. In this screen, you can see the 5 generations. The computers are basically consisting on 5 generations. Okay, in this screen you can see the invention from first generation till 5th generation. Okay, let's see over here. Check out my mouse. Check out my mouse. This is first generation, where vacuum tubes has been launched. In second generation there were transistors, and in third generation there were integrated circuits, and fourth generation a very large scale integration where there are microchips were involved. And now fifth generation is on, that is ultra large scale integration, where facial expression and a lot of artificial intelligence needs to work on. The first slide is covering up just an intro of the 5 generations. Let's talk about the generations in details. Okay. First generation of computers covered in 1945 to 1956. That was around 10 to 11 years cover up. This generation was consisting on the computer systems which were based on vacuum tubes. Vacuum tubes are basically this sort of a small bulbs. Vacuum tubes are like a sort of a small bulbs which consume lot of powers. And once all the bulbs are connected together in one line, so they generate lot of heat and good processing. Processing they provided, like check out my mouse, that was providing 5,000 additions per second and 350 multiplications per second. That's a good processing at that time. But at the other end, those vacuum tubes, those number of bulbs was producing extreme heat in the room where the computer has been placed. It was large in size, that was not very small. It was large in size and very expensive. It was not that cheap that anybody can go and purchase it. It is very expensive and the big companies can buy it. Those machines can use the machine language only. Not other than machine language. This machine cannot understand other than anything of machine language. Punched cards and paper tapes were be given as the input. Remember in previous class I have guided you about the tabulating machine. In tabulating machine they were using the punch card as input. Paper tapes को भी as input use किया जाता था. At that time it was the fastest calculating device in the history. I have to be bilingual over here. मैं आपको उर्दू में भी समझा देती हूँ थोड़ा सा. कंप्यूटर्स की जो पहली जनरेशन आई थी वो तकरीबन 10 से 11 साल पे कवर करती है. दैट इज 1945 टू 1956. 1945 से लेकर 1956 तक. उस वक्त उसमें हजारों के करीब वैक्यूम ट्यूब्स अटैच किए जाते थे. वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? छोटे साइज के बल्ब होते हैं. छोटे साइज के बल्ब होते हैं जिनको के साथ साथ इंटरकनेक्ट करके बोर्ड के ऊपर प्लेस किया जाता है. Thousands of vacuum tubes. एक बल्ब लेगा, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब, 10 बल्ब, 15, 20 करते करते करते. If I'm talking about 1,000 bulbs, so 1,000 bulbs definitely it will take much space. अगर मैं 1,000 vacuum tubes की बात करती हूँ तो वो बहुत स्पेस लेगा. और ये 1,000 ही है, नंबर ऑफ थाउजेंड्स है. इट कंज्यूम लॉट ऑफ पावर. बहुत ज्यादा पावर ये कंज्यूम करता है. इसका नुकसान ये था कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था. इट वाज बिग इन साइज, बहुत ज्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था, मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता था. इनपुट देने के लिए हम इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप्स इंसर्ट करते थे तो मशीन को पता चलता था कि व्हाट इज द टास्क मशीन इज सपोज्ड टू परफॉर्म. उस वक्त ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि 5,000 एडिशंस और 350 मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर सकती थी. So keep in your mind that first generation of computer,
that was consisting on 1945 to 1956 are based on vacuum tubes. Okay, so let's move forward for the second generation. In second generation, things were quite comparatively easy and small in size, where scientists has been used the transistors. This is a type of transistor. Where there was a small bulb, and now they are using this transistor. So these transistors are smaller and faster than the first generation computers. And first generation computers was much expensive too, but this was cheaper and more reliable. Vacuum tubes इतने ज्यादा रिलायबल नहीं थे बिकॉज वो जितना हीट प्रोवाइड करते थे इट कैन बर्स्ट आउट, ब्लास्ट हो सकता था. ठीक है, हीट जनरेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी. उसको कूल डाउन करने के लिए काफी ट्रबल करना पड़ता था. एसीज के अरेंजमेंट्स और कूलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी एक इशू था. बट आफ्टर कमिंग कमेंसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इन्वेंटर्स को थोड़ा सा आसान हुआ क्योंकि उन्होंने ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट कर लिए थे जो कि स्मॉलर थे साइज में और फास्टर थे. साइज भी स्मॉल था, आसानी से इंसर्ट हो जाता था और स्पीड भी बहुत तेज थी. एक्सपेंसिव नहीं था, चीपर था और रिलायबल था. मतलब ब्लास्ट नहीं करेगा, हीट जनरेट नहीं करेगा. मोर एनर्जी एफिशिएंट, जितनी तेजी से इनपुट लेता था उतनी तेजी से इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट भी करता था. कहते हैं स्टिल जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट. अभी भी हीट था, नॉट एज मच एज वैक्यूम ट्यूब्स वर जनरेटिंग, but still there was heat. Vacuum tubes जितना heat नहीं था लेकिन फिर भी heat था. So they were using magnetic core technology. वो magnetic core technology use करते थे to save instructions in memory. जितना भी कंटेंट पे काम हो रहा है उसको सेव करना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है. मेमोरी में सेव रहेगा जितनी देर कंप्यूटर ऑन है और उसके बाद किसी डिवाइस में स्टोर रहेगा हमेशा के लिए. तो they used machine language and assembly language. In first generation, they were using only machine language, and in this second generation, where transistors are using all, they are using machine and assembly language both. Okay, so keep it in your mind that first generation is with vacuum tubes, and second generation is with transistors. Okay, so let's move forward towards the third generation. Third generation is all about ICs. ICs stands for integrated chips. ICs stands for integrated circuits or integrated chips भी कह सकते हैं इसको. Those were smaller and faster. But the vacuum tubes इतने size का था. फिर transistor आया that was quite thin and slim, and then ICs which is a sort of my fingertip. It was smaller and faster. वो बहुत छोटा था और स्पीड में तेज था. It was cheaper than second generation. That's the main point. It was cheaper than the second generation. Second generation के computer system से ये less expensive था. Accessed using keyboard and monitor. Previously, punch cards has been used as input devices, and here they are using a keyboard as input devices. And they were using operating system. They had a user-friendly operating system through which a user can see what is happening on the screen. Made available to large number of people. Since it was less expensive and covering less space, so people was trying to buy it, and they tend to buy it, and they had it. लोगों ने इसको खरीदने की कोशिश की, उनकी रेंज में आया, उनके लिए लेस एक्सपेंसिव था, जगह कम कवर करता था, आसानी से घर में प्लेस हो सकता था, तो लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया और अपने अपने घरों में इस्तेमाल करना शुरू किया. ठीक है, दैट वाज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. आफ्टर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इट वाज अ ब्लास्ट इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. और उसके बाद एक बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस है मार्केट में. देखते हैं वो क्या थे. उस वक्त रैपिड चेंजेस मार्केट में जब फोर्थ जनरेशन लॉन्च हुई. लॉन्च नहीं होती है ये चीजें, हम कवर कर रहे हैं. उस वक्त हमारे पास एक नई चीज है, दैट वाज माइक्रो प्रोसेसर. इससे पहले हमने सबसे पहले देखे, याद करें, जहन में लेकर आए, अभी हमने क्या पढ़ा. नंबर 1 that was first generation vacuum tubes, number 2 second generation transistors, and number 3 third generation integrated circuits. ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर विद VLSI. यहाँ देखें मेरा माउस कहाँ जा रहा है.
माउस की मूवमेंट देखें, माइक्रो प्रोसेसर विद VLSI। माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग मशीन है जो कि सिस्टम के अंदर अटैच्ड है, दैट इज माइक्रो। उसका साइज ही बहुत छोटा हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस का ही साइज छोटा हो गया। Once the processing device is smaller in size, then definitely the machine will be covered into the smaller in size. So let's talk about the points about this. Microprocessor with VLSI. VLSI, what is VLSI? VLSI is very large scale integration. ऐसी इंटीग्रेशन जो कि बहुत बड़े लेवल पे की गई थी पूरे सिस्टम के साथ। एक माइक्रो प्रोसेसर पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है अपने अंदर, उसे पता है इनपुट कहाँ से आएगा, उसे पता है आउटपुट कहाँ जाएगा, उसे पता है प्रोसेसिंग किस तरीके से होनी है, उसे पता है कि सिस्टम के अंदर डेटा को किस तरीके से सर्कुलेट करना है। एंड इफ दे आर हैविंग मल्टीपल अदर डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर और प्लॉटर, तो मशीन नोज दैट हाउ टू रिएक्ट विद द आउटपुट डिवाइसेस टू। ठीक है, तो इट्स ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंच कार्ड है या सिर्फ कीबोर्ड है या सिर्फ हार्ड डिस्क है या सिर्फ प्रिंटर है, नो इट्स नॉट दैट, इट्स अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हर चीज अटैच हो सकती है उसके साथ। ठीक है, नॉट ओनली हर चीज अटैच हो सकती है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, थाउजेंड्स ऑफ आईसीज ऑन अ सिंगल चिप। एक चिप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज वर कनेक्टेड। थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज हैं। फोर्थ जनरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज लगे हुए हैं, दैट विल बी मोर स्मॉलर इन साइज। ओके, this is the picture of microprocessor at cheapest and work at high speed. It was a blast when a computer system was much cheaper, it's in the range of everybody and it's at high speed. एक extreme speed आपको provide कर रहा था processing। It was accurate and reliable, आपको accuracy reliability मिल रही है, आप computer system को use कर रहे हैं। Why? Because it is giving you the accurate results. Large memory, it is covering up the storage of large content, बहुत ज्यादा कंटेंट को अपने अंदर स्टोर कर सकता था और उसे सेव भी कर सकता था। अभी जैसे लाइक सपोज आई एम कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लास, जूम पे मैं ये क्लास ले रही हूँ, राइट नाउ माय क्लास व्हिच आई एम कंडक्टिंग इज स्टोरिंग इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। Once I close the session, then it will be converted into another format and then it will be saved in the hard disk. हार्ड डिस्क से पहले जो सेव हो रहा है दैट इज मेमोरी, और मेमोरी में इतनी बड़ी फाइल का स्टोर होना इट्स ह्यूज। ठीक है, ये जो कंटेंट मैं यूज कर रही हूँ इट इज फार लेस देन द अदर कंटेंट्स, ये बहुत बड़े बड़े कंटेंट से बहुत छोटा है। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं वर्ल्ड में जो कि मेमोरीज में आसानी से स्टोर हो जाती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसिंग सिस्टम। द लास्ट वन इज GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस किए गए, दैट वाज मोर रिलायबल एंड मोर यूजर फ्रेंडली। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, 4 जनरेशंस में हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी आ गई। वो डिवाइसेस क्या क्या थी, इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज करते थे, ये माइक मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा होगा, माइक कैन बी अटैच्ड, स्पीकर्स आ गए, आप सुन सकते थे। इसके साथ साथ आपको जॉयस्टिक आ गई जिससे कि आप अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ गेमिंग सिस्टम के लिए। आपके स्कैनर्स आ गए, आपके प्रिंटर्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हो सकती थी। तो 4th जनरेशन वाज अ ब्लास्ट इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। जब 4th जनरेशन आ गई ना, व्हाट इज 5th जनरेशन देन? अभी जो हम जिन कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, इनका बेस जो है वो 4th जनरेशन पे ही है। तो फिर 5th जनरेशन क्या है? So let's talk about the 5th generation. 5th generation is future. What is happening now in computer industry, in field of invention, and what will be happening in the future is 5th generation. It is all about artificial intelligence. People are saying it AI also. Artificial intelligence will be working on ultra large scale integration. Very large scale तो है, ultra large scale. If you can think, 4th generation computers में क्या था, very large scale था,
वेरी लार्ज स्केल में मैक्सिमम कहाँ जाते थे हम, कंप्यूटर से कंप्यूटर भी कनेक्ट हो जाता। फाइन, अभी यहाँ पर मैं आपसे वायरलेस कनेक्टेड हूँ, आपका और मेरा सिस्टम हजारों मील दूर पड़ा हुआ है। You are staying thousands of miles away from me, or maybe thousands of kilometers away from me, but we are talking to each other. We can see each other. So that is the ultra large scale integration. मेरा कंप्यूटर सिस्टम मेरी it is at my house, मेरे घर के एक रूम के अंदर है, आपका कंप्यूटर सिस्टम आपके घर के एक रूम के अंदर है, हमारे दोनों सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। दैट इज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन है ये। मेरे सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है, माइक अटैच है, स्पीकर अटैच है, इंटरनेट अटैच है, and similarly you are also having the other devices attached with your computer. So if both the computers are connected without wire and with the distance, that means it's an ultra large scale integration. There are a lot of other things as the example of this, like people are sitting in Canada and talking to somebody in Pakistan through WhatsApp. So that is a technology. We are not making a phone call, we are making a WhatsApp call. Okay, there are a lot of other examples too, like an email. Email के through भी आप बहुत सारी चीजें connect कर सकते हैं. It's a faster and cheaper. It's extreme faster. It is extreme faster. It is not that it's just faster. No, it is just think it and it will be going. Like if I'm talking about my mobile system, what my mobile system is working on? It's working on touch. Once I slide the screen, it's open up. इसी में स्क्रीन स्लाइड करती हूँ, वो अपने स्क्रीन व्यू करवा देता है और मुझे एप्लीकेशंस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम can understand the facial expressions and handheld expressions too. Like if I'm having a more security in my computer system of my facial expressions, so it require to see my face and scan it first to open up the computer screen to access somebody to the data. जैसे मैं सामने की तरफ देखूंगी वो मेरा फेस स्कैन करेगा और अगर उसका स्कैन उसमें जो प्रिजर्व हुआ है मेरा फेस उससे मैच करेगा तभी वो आपको स्क्रीन अलाउ करेगा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप जो कि मार्केट में आ चुका है एंड पीपल आर यूजिंग इट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट है, अपने ऊपर भरोसा करता है, यही वाली चीज जो अभी मैंने आपको बताई। क्वांटम टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट ओनली a nano technology, it's a quantum technology which is 1,000 times much faster than the fourth generation. It's an intelligent computer. Computers are intelligent. It's a machine and it's intelligent. It's intelligent more than a human. How? जो अभी मैंने आपको बताया कि वो मेरा हाथ का एक्सप्रेशन जेस्चर जो से फील करेगा, एक्सेप्ट करेगा, स्कैन करेगा, वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से स्कैन करेगा, वो मेरे कोड्स पढ़ सकता है, वो मेरे पासवर्ड सेव कर सकता है। So it is intelligence. Okay, understand? I hope it's all clear from my side. Okay, let's talk about the question answer session. Okay, before starting the question answer session, let me guide you about the home task. You are supposed to make a booklet of 6 sheets. आपको 6 sheets की booklet बनानी है। ये काम आपका कंप्यूटर्स पे नहीं है, ये आपको हार्ड कॉपी पे करना पड़ेगा। 6 शीट्स की आपने एक बुकलेट बनानी है, कलर्ड शीट्स ले लें, उनकी बुकलेट आप उसमें बना लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक मींस फर्स्ट पेज विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, दैट विल बी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, एंड देन सेकंड पेज विल बी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसका आप इन्फो लिखेंगे, बुलेट्स लिखेंगे और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स लगाएंगे। नेट से पिक्चर्स देखें और हाथ से बनाएं, मुझे पेस्टिंग नहीं चाहिए। ओके, you are supposed to make the hand drawn pictures. In third page second generation लगाएंगे and then info in bullets and hand drawn pictures. Similarly move towards the fifth generations of computers. So at the end of the day you will be having a booklet in your hand with the name of generations of computer. Things are difficult to memorize all the time, so make a booklet. Once you write, once you design, so you will have more memorization about the topic. Understand? I hope it's all understand from
for this topic. So let's start the question answer session. Okay, children. Okay, now tell me. Do you understand the topic? Open up your mics and tell me, do you understand the topic? Yes. Okay. Anything which you need to ask? Aisha Kashif, do you understand everything? Aisha? Aisha, Yes. can you hear me? Yes. Okay, now answer me. Do you understand each and everything? Yes. Okay, now answer me, Hurbano and Aisha. Musa, you? Yes. Okay, answer me. I'm asking you a question. Question number 1. First generation computers are based on dash. First generation computer किस पे base करते हैं? Vacuum tube. Vacuum tubes. Very good, Aisha. Second generation of computers are based on transistors. Second generations of computers are based on transistors. Very good, Musa. Okay, third generations of computers are based on integrated chips, that is ICs. Fourth generations of computers are based on Microsoft. no, Microsoft. not microprocessor. Fourth generation of computers are based on microprocessor. And what about fifth generation? Fifth generation is all about artificial intelligence. Fifth generation is all about artificial intelligence. Okay, good. Now tell me, why vacuum tubes were not praised a lot? Vacuum tubes को इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं किया गया? क्या वजह थी उसकी? जो फर्स्ट जनरेशन में थे ना छोटे छोटे बल्ब्स, उनको क्यों बहुत ज़्यादा नहीं यूज किया गया? Like thousands vacuum tubes. Very good, Aisha. The reason behind it, it produced lot of heat. It produced lot of heat and it consumed extreme energy. बहुत ज़्यादा heat produce करते थे और बहुत ज़्यादा energy लेते थे. ठीक है? Second generation, it was also producing heat. Third generation, that was much acceptable because it was cheaper and more reliable. Fine. And then microprocessor, no issue of heat and no issue of energy. Like right now I'm using my laptop, it is cordless, wireless है, मैं इसको लेके कहीं भी चली जाऊँ, so I can take your class from anywhere. Okay, okay children. So I will be sending you the PPT. I'll be sending you the PPT after 1 minute of this recording. Any question, any problem from your side if you're facing so? बेटा कुछ point है तो पूछ लीजिए please. No. Okay, okay, nice. That's really good that you understand each and every point. I'm sending you the PPT at WhatsApp. So this is all from my side. I'm closing the session. Thank you very much and Allah Hafiz. Have a good day. Allah Hafiz.